नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करुछि मु तपन। वर्तमान समय सबुठारु बड़ खबर जे पांड्यान को नहीं विभिन्न चर्चा आलोचना चलुवा बेले एबे मुख्यमंत्री बा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक गोटे बड़ बयान देइछंती। जातीय गणमाध्यम को प्रतिक्रिया दे नवीन कहिछंती जे पांड्यान 10 वर्ष भितर ऑफिसर भाव में भल काम करिछंती एवं तांकु समालोचना करिबा दुर्भाग्यजनक। एक बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक कहते जे पांड्यान को समालोचना करने दुर्भाग्यजनक। एपरिकी क्लीन चिट देइछंती पांड्यान को बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। जितेबाला बीजेडी पराजय होइछि तमाम बीजेडी नेता माने पांड्यान को दोषारोप करुछंती। एपरिकी लोक माने पांड्यान को पई बीजेडी पराजय होइछि बोली कहितबा बेले किंतु दलर सुप्रीमो नवीन पट्टनायक किंतु पांड्यान को क्लीन चिट देइछंती एवं पांड्यान भल काम करछंती 10 वर्ष भितर बोली कहिछंती नवीन। एवं उत्तराधिकारी प्रश्न में आउ थे नवीन दोहराइछंती जे ओडिशावासी बीजेडी उत्तराधिकारी बाछिबे, पांड्यान मोर उत्तराधिकारी नुहंती। एक नवीन पट्टनायक जातीय गणमाध्यम एजेंसी को निज प्रतिक्रिया कहिछंती। जेतेबेले बीजेडी पराजय होइछि नवीन मानस मंथन करुछंती। एपरिकी गतकाली संध्यारे मध्य भिके पांड्यान नवीन निवास जाइथिले एवं यहाँ पर नवीन गोटे प्रतिक्रिया देइछंती जे पांड्यान को समालोचना करने दुर्भाग्यजनक। 10 वर्ष रे भिके पांड्यान भल काम करिसेंती। यहाँ से कहिसेंती जे विरोधी दल भूमिका आम आगकू लोकों लड़ाई जारी रखिबू एवं दीर्घ वर्ष धरी ओडिशार लोक माने सरकार को आनिबाकू सरकार रे बसाई धन्यवाद जणाइछंती एवं अनेक विकासमूलक कार्य करिछि बीजेडी। सेथिपाई आमे गर्व करूछु बोली कहिसेंती नवीन पट्टनायक। आसंतु देखिबा कोन कहउचंती नवीन तांको बयान रे। In a democracy, you either win or you lose. So, having been defeated after a long time, we must always take the verdict of the people gracefully. I've always said that the 4.5 crore people of Odisha are my family, and I will continue to serve them in whichever way I can. It has also come to my notice there's been some criticism of Mr. Pandyan. This is unfortunate. As an officer, he did excellent work in many fields in the last 10 years, helping with the cyclone, the 2 cyclones, and with the COVID-19 epidemic in our state. After this good work, he retired from the bureaucracy and joined my party and has contributed largely to that by doing excellent work. He is a person of integrity and honesty and should be remembered for all that. There have been some questions on my health. I want to say here quite categorically that my health has always been fine and continues to be so. You have seen that in the last month I have done hectic campaigning in the heat, and that should be enough to give a verdict on my health. Again, I thank all of you for your attention. Thank you. I'd like to add that Mr. Pandyan has also worked in and helped in health, in education, in sports, and our program of temple restoration. Mr. Pandyan joined the party, has not held any post. As you know, he didn't fight in this elections from any constituency. And I've always clearly said, Wanna be IAS officer? Join PST Gurukul, the best boarding school. For plus 3 teaching and coaching by Bajirao IAS Academy, call 9438 782020.